I guess we can watch this one. 9 prediction Shaka Laka Boom Boom made about 2022. Is that a person or like a movie? By India in Pixels by Ashris. Let's go. 2022 इसका मतलब मैं 2022 में आ गया हूँ। I know bro, मुझे खुद यकीन So it's a movie about going to the future. I see. नहीं हो रहा कि मैं 2022 में आ गया हूँ। अभी तो 2017 चल रहा था यार। अगर तुम भी But मेरी तरह 2025. सेल्फ प्रोक्लेम 90s किड हो ना, then probably स्टार के फैंटेसी शोज ने तुम्हारे बचपन को भी शेप किया होगा। दज्जाल के 7 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हातिम का एडवेंचर्स में जाना, या फ्रूटी का एक वीडियो गेम में फंस जाना बिकॉज ऑफ अ कंप्यूटर वायरस, जिया That's का cool. पैम को बैगन बना देना, और एक ऐसी आत्मा जो बस इलेक्ट्रिसिटी से ट्रांसमिट करती है। ऐसी सारी शोज ने मुझे बचपन में वियर्डली कुछ अलग, कुछ हटके, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए इंस्पायर किया था। और इन सारे शोज में से मेरा फेवरेट था शाका लाका बूम बूम। इस शो का प्रोटैगनिस्ट था संजू, द मशरूम हेयरकट बॉय विद अ मैजिक पेंसिल, जिससे वो जो भी बनाता सच हो जाता। Oh, that's cool. संजू के फ्रेंड्स थे रितु, पार्थो और जग्गू, और इन सबकी पर्सनालिटीज एक वर्ड में समराइज हो सकते थे। नहीं, उसके और भी फ्रेंड्स थे, करुणा थी, चंदू था, टिट्टो था, एनीवे। तो ये स्टोरी तो सबको याद होगा, बट डू यू नो दैट दिस वाज जस्ट सीजन 1? जी हाँ, शाका लाका बूम बूम के टोटल 4 सीजन्स थे, और ये इन्फॉर्मेशन बस मुझ जैसे प्रो फैंस को पता होगा। सीजन 2 वाज ऑल अबाउट दिस एलियन कॉल्ड शान, जो धरती पे आता है और 4 बच्चों की हेल्प करता है, लाइट सेबर से गुंडों को फाइट करता है, काइंड ऑफ लाइक कोई मिल गया मीट स्टार ट्रेक, स्टार वॉर्स, आई डोंट नो। 3rd सीजन में शान, संजू और जोया एक मैजिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं जिसका नाम है जादू हाई, एंड यस, इट डज सीम इंस्पायर्ड बाय हॉगवर्ट्स, like really inspired, like really inspired. Okay. And the 4th season is SLBB 2022. प्रीमाइज ये है कि संजू जब जादू हाई से अपने घर मैजिक कारपेट में लौट रहा था, तो वो एक टाइम फॉग में फंस जाता है। वो एक गलत स्टेप लेता है और आगे फ्यूचर में 18 साल बाद चले जाता है। So let's see the prediction. 2004 to 2022. So because I was a hardcore Shaka Laka Boom Boom fan, मैं इसको पूरी आखिरी एपिसोड तक देखा। 2004 में मैंने प्रण लिया था कि बड़ा होकर एक बड़ा यूट्यूबर बनूंगा और 2022 में इस शो को रिविजिट करूंगा। जोक्स अपार्ट, आई थिंक इट्स रियली सरियल कि हमारे बचपन में हमें जिस साल को फ्यूचर के एग्जाम्पल के तौर पे पेश करा गया था, आज हम उस साल में एंटर कर रहे हैं। Boy, that makes me feel old. I was like this kind of stuff. Like there's some old interviews of people in the 40s, 50s, 60s, 70s, where they interviewed about like life in the 2000s, right? Like how do they think it would have changed? And some people have like no real idea, and some people have like some pretty accurate prediction. You know, it's super interesting. इस शो ने 2022 के काफी फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स इमेजिन किए थे, एंड नाउ दैट वी आर इन 2022, हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इस शो के प्रेडिक्शंस कितने सही और कितने गलत साबित हुए। तो चलो, लेट्स रिव्यू ऑल द प्रेडिक्शंस दैट द शो मेड एंड देखते हैं कि वो कितने एक्यूरेट हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्मेका। जैसे ही संजू 2022 में एंटर करता है, वी हियर फ्रॉम दिस येलो स्पीकर बॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी कार्ड कॉल्ड स्मेका। अपना सिक्योरिटी कार्ड स्मैका हमेशा तैयार रखिए और अपनी किसी भी टाइम सिक्योरिटी चेकिंग One demonstration. ऑथराइज्ड SM थॉमस प्रिंसिपल। स्मेका, ये क्या है? फिर जब संजू को गार्ड्स अरेस्ट कर लेते हैं, तो वो भी संजू को उसके स्मेका कार्ड के बारे में पूछते हैं। तुमने स्कूल की सिक्योरिटी को ब्रीच क्यों किया? और तुम्हारा स्मेका कहाँ है? स्मेका? नाउ इस शो में कभी कुछ एक्सप्लेन किया नहीं जाता कि ये स्मेका आखिर है क्या, बट माई गेस इज दैट इट कुड बी समथिंग लाइक अ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, स्मेका। आई डोंट नो, दैट्स जस्ट माई गेस। पुलिस भी जब संजू के आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछती है, देन दे नोटिस कि संजू का कोई स्मेका कार्ड नहीं है। उसका कोई आइडेंटिफिकेशन, स्मेका, आई स्कैनिंग कुछ तो किया होगा उसने। This all points to the fact that Smeka is some kind of an identity proof for every person. संजू को फिर गार्ड्स जब IT प्रिजन में ले जाते हैं, तो उसके आई स्कैन किए जाते हैं और ये सिस्टम उसकी पूरी हिस्ट्री बता देती है। नाम संजू, स्टूडेंट क्लास 2008, 3 बार क्लास 8 में फेल हुआ, स्कूल से निकाल दिया गया।
which means that there knows is a certain everything, stop kind of it. biometric information जो कि stored है with a person's profile. All of this reminds me of our Aadhaar system, जहाँ हमारे eyes के साथ हमारे fingerprints भी एक ID के साथ एक national database में stored हुए What's हैं. up? हमारी हर national activity में इस number का use होता है. So in many ways I feel we have something like a SMECA today, जिससे हर citizen की biometric और personal data linked हुए हैं. इस शो में संजू के एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी स्मेका के साथ लिंक किया गया है. Therefore, while I think it is a pretty accurate prediction, Smeka seems to be far more dystopian than what Aadhaar is. So I'll give this prediction a good 9 out of 10. Frankly, like, it's not that unbelievable, right? Like, you know, we all carry our ID around, but with the advanced technology, you know, we have a bunch of different stuff, right? You've got your ID, you've got your credit card, you've got your passport, you've got your driver license, you've got your card for like health insurance, a bunch of different stuff, right? Like, what if you had like, let's say, one card that can be used for everything, you know? Like, if you go to the store, you can use it, like, you can scan it for credit card. It can also be used for this or that. I mean, for hackers and scams and stuff, it would be pretty good. But I kind of feel like, you know, this is the kind of thing that would be very convenient if, you know, you didn't have to get hacked. Maybe the system to make sure it's you is that the card has like a blood scanner system. So like, you take your card, it pricks your blood, and it tests if it's you. So every time it takes a bit of blood. Moving on. Number 2. Uber self-driving cars. संजू जैसे ही अपने स्कूल से निकलता है, he sees this voice controlled taxi calling Pole, जो कि संजू से पूछकर एक टैक्सी ऑर्डर कर देता है. And well, the taxi arrives to him in no time. And guess what? The taxi is driverless. Self-driving car. संजू बैठने के बाद एक कीबोर्ड देखता है जिसमें उसे अपना डेस्टिनेशन एड्रेस इनपुट करना होता है. The car also has a AI voice which tells him कि children के लिए transportation free है. So he gets dropped to his destination free of charge. Interesting. So a lot of points here. While self-driving technology is actively under development at Uber and other cool places, we are nowhere near commercial usage. At least India में तो नहीं. Also, our mobile devices are much better for inputs than keyboards like this, as the show imagines. I was watching some video recently, like some Chinese, I think it was the government of China paid some like independent company to make a bunch of tests of all the different like major brands of self-driving car, right? From Tesla to some of the Chinese one, right? And they did a bunch of tests on an actual road, but that they had closed off, right? So they would use like dummies of kids and stuff like that. And the results were like kind of terrible. I mean, let's just say that a lot of kids would die. And that there was no real standout, you know, like most of the brands were not doing that great. I've never been into any kind of self-driving car myself. I mean, I've never even seen one, but I don't think I'd get into one anytime soon. And we definitely don't have socialist policies like transportation बच्चों के लिए free होना. But the closest we have to this idea is Uber, जिसमें you can call the taxi to you. Also, आजकल काफी cars smart होने लगे हैं, where AI is built into the cars. Tesla का example ही ले लो. But none of this is so ubiquitous in 2022 as the show shows. अभी तो हम electric vehicles ही popularize करने में लगे हैं. And yes, हमारे पास voice assistants हैं like Alexa and Google, but they still live in our phones and electronic devices, and they're not deployed in everyday objects around our cities. So I think we can give this idea a good 5 out of 10. Okay, next. Earlier, स्कूल के गार्ड ने मेंशन किया था कि पूरे सिटी में there's a huge network of CCTV cameras जिससे पुलिस क्राइम होने से पहले ही डिटेक्ट कर सके. इस शहर में चारों तरफ हमारे सर्वेलेंस कैमरा लगे हुए हैं. अगर कोई कुछ गड़बड़ करने की अगर सोचेगा भी तो हमारे हाथों से पकड़ा जाएगा. ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं देते, but I feel this is an application of facial recognition technology, जहाँ पे surveillance cameras can point out which person is doing what and alert the authorities if something fishy is happening. So I don't think ये हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा common है, but in countries like China, this is a way of life. So I think we can give this prediction a good 8 out of 10. संजू की 2022 में आई स्कैनर सब तरफ हैं. अपने घर को एंटर करने के लिए भी संजू को एक आई स्कैनिंग डिवाइस से गुजरना होता है. Security cleared. Looks crazy. घर में जाने के लिए भी आई स्कैनिंग. ना हमारे टाइम में आई डोंट थिंक हम आई स्कैनर्स का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट वी सर्टेनली हैव समथिंग सिमिलर.
We use RFID scanners and fingerprint readers and The video channel because I wanted to sound something. Something you want to watch for yourself. most corporate offices today. So What is मुझे it? लगता है कि prediction काफी close है. Let's give it a good 9 out of 10. Yeah, but it's not eye scanners. Maybe like in some of the phone unlock system, you might have like eye scanner. Yeah. अपने घर पहुंचने के बाद संजू is shocked to find it all abandoned. जब वो अपने बेडरूम में होता है तो वो किसी की आने की आवाज सुनता है और अपने टेबल के नीचे छुप जाता है. संजू sees that this black jacket intruder has a gun with him. फिर वो अपने साइबर कंप्यूटर जैसे डिवाइस में कुछ करने लगता है. इसके स्क्रीन का डिस्प्ले seems to be floating in the air. Now, ऐसा आज पॉसिबल है यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, बट हमें इसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक स्क्रीन या एक वेरेबल डिवाइस की जरूरत होगी. बिना किसी स्क्रीन या वेरेबल के ऐसा डिस्प्ले क्रिएट करना बस एक टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है और वो है हॉलोग्राम. Holograms help you see virtual things without the need of a wearable device. Hologram technology के फील्ड में काफी सारा रिसर्च तो हो रहा है, but it is nowhere close to commercial usage. So something like this, quite difficult. So let's give. I mean, he's wearing glasses though. Like, I'm pretty sure we're getting there pretty fast with glasses. Not long ago, I saw like some kind of glasses that are a system for people who are like deaf. When someone's talking to them, the glasses will display it in text. So it's not so different. Give it a good 5 out of 10. We find out that this guy is a criminal called Sandros, जिसके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी है. पुलिस संजू के घर पे रेड मारती है, बट सैंड्रॉस संजू को हॉस्टेज बनाकर निकल लेता है. दोनों फिर पहुंचते हैं एक अबैंडन्ड गोडाउन में, जहां सैंड्रॉस संजू को बताता है कि वो एक साइबर हैकर है जो कि बैंक से डिजिटली पैसे चुराने में एक्सपर्ट है. संजू कॉन्स्टेंटली डिसलाइक्स सैंड्रॉस बिकॉज वो एक क्रिमिनल है और दोनों में बहुत ज्यादा तू में चलता रहता है. फ्रस्ट्रेटेड संजू गोडाउन से भाग जाता है और उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और टेनिस बॉल्स से मारते हैं. अनयूजुअल. संजू को बचाने के लिए आ जाता है सैंड्रॉस, जो कि गुंडों की धुलाई करता है. एंड संजू, I guess, starts warming up to him. Kind of like how Pikachu warms up to Ash after the battle with those bird Pokemons. No one? Nobody? Yes. Okay. Good reference. Meanwhile, police Sandros को ढूंढ रही है and we see them use some kind of GPS tracking interface and also an alerting device जो कि उनके बाइक में integrated है. I think आज के टाइम पे thanks to Google Maps, mapping problem is pretty much solved. So that is a very realistic prediction. I will give it a perfect 10 out of 10. And I mean, solved is kind of like, it's mixed, right? I mean, myself, like using Google Map, I've had a lot of time of making mistake. And literally recently I was watching some video by the channel Interesting Or, yeah, I think it's called Interesting Or. And it was like some American family that used GPS and they were, going somewhere, right? But it made them take the wrong turn. And let's just say that basically the dad ended up dying as they got stuck in like a snowstorm, and they stayed for days, but then the dad tried to go get help and died. All from like just, Google Map basically kind of fucking up. Yeah. Depends on the service, yeah. remember that this show is being made in 2004, जहाँ internet, mobile phones कुछ नहीं है. So this is a bold prediction, even if it seems so ubiquitous today. That's like the third time I'm saying ubiquitous. Anyway, so back in the godown हम देखते हैं कि दोनों लड़के एक गेम खेल रहे हैं using a device जो संजू को मिलता है गोडाउन से. But instead of a game like FIFA, ये दोनों एक एक्शन गेम खेल रहे हैं जो कि इतना रियल है, इतना ज़्यादा रियल है कि एक मूवी से उठाया गया है. Yes, the show literally एक मूवी प्ले करती है और हमें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं. वैसे आज के टाइम पे गेम के ग्राफिक्स काफ़ी रियलिस्टिक हो चुके हैं, गेमिंग कंसोल्स भी काफ़ी कॉमन है. सो हम इस आइडिया को दे सकते हैं अ गुड 9 out of 10. एक पॉइंट इसलिए काट रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव हाइपर रियलिस्टिक गेम्स लाइक दिस जो कि एक मूवी की तरह दिखती है. ऑल राइट, सो अब वो प्लॉट ट्विस्ट जो शायद तुमने फिगर आउट कर ही लिया होगा. फाइनली ये दोनों रियलाइज करते हैं कि सैंड्रोस ही संजू का फ्यूचर वर्जन है. दे आर द सेम पीपल. तुम सोचोगे कितना ज्यादा ऑब्वियस था ये, बट उनको ये डिड्यूस करने में 6 एपिसोड्स लगते हैं. सैंड्रोस पे संजू को अपनी बैक स्टोरी सुनाने लगता है. वो बताता है कि 2 गैंगस्टर्स कॉल्ड माधवन एंड नटवर ने संजू के मैजिक पेंसिल के लालच में आकर
उसके पेरेंट्स का खून कर दिया था। अपने पेरेंट्स के गुजरने के बाद संजू अपने दोस्तों के घरों में रहने लगा, बट वहाँ भी मैडी एंड नट्स के धमकियों की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ा। वो स्कूल में भी अपने लाइफ के इश्यूज़ के कारण अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। गुस्से में आकर वो अपने मैजिक पेंसिल भी फेंक दिया। फाइनली जिंदा रहने के लिए उसे इलीगल एक्टिविटीज़ करने लगे, जैसे कि लोगों के सिग्नेचर्स फॉर्ज करना। एंड दैट इज हाउ संजू बिकेम अ क्रिमिनल। संजू बिकेम सैंड्रास। कितनी ज्यादा ट्रैजिक और ट्रॉमेटिक स्टोरी है, बट मजाल है किसी की कि हमारे संजू को ये इम्पैक्ट कर सके। संजू को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। The only thing he cares about is that Sandros is a criminal and उसे फ्यूचर में क्रिमिनल नहीं बनना। वाह मेरे शेर, वाह। कुछ एपिसोड्स के बाद we see that the police officer शीना इन दोनों को ढूंढ लेती है, बट इनकी कहानी सुनने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है एंड शी एम्पैथाइजेस विद देम। देयरफॉर वो सैंड्रोस को गोडाउन से एस्केप करने में हेल्प करती है। वो एक प्लास्टिक सर्जन को इनवाइट करती है टू हेल्प सैंड्रोस चेंज हिज फेस एंड एस्केप। आई डोंट नो मैं इस प्रेडिक्शन के बारे में कैसे फील करूं, बिकॉज एकता कपूर ने तो ये प्लास्टिक सर्जरी 2000 में ही इन्वेंट कर लिया था। गैजेट्स थोड़े कम फैंसी थे बस। Another medical innovation this show predicted was the instant healing drops, जिससे कोई भी इंजरी इंस्टेंटली हील हो जाती है। So, कितने रियलिस्टिक हैं ये predictions? Sure, आज हमारे टाइम पे क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम काफी इजीली एक जेनेटिक लेवल पर चेंजेस कर सकते हैं। We also have stem cell technology, जिससे हीलिंग और रिकवरी काफी आसानी से हो सकती है। बट समथिंग दिस इंस्टेंट, वेरी डिफिकल्ट। ऑल्सो while हम रोबोट्स का यूज करते हैं सर्जरीज में, there is nothing that is so painless and so instant. So I'll say that the medical innovation के सारे predictions they get 2 out of 10. शो के एंड की तरफ ये दोनों फिगर आउट कर लेते हैं कि जिस डिवाइस से ये लोग गेम खेल रहे थे वो असल में एक टाइम मशीन है। संजू एंड सैंड्रोस डिसाइड करते हैं कि इसकी मदद से वो पास्ट में जाएंगे और अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेंगे एंड ऑल्सो उनको बचा भी लेंगे। बिकॉज ऑफ अ ग्लिच दो 2004 के बजाय आदमकाल के जमाने में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वो काफी एडवेंचर करते हैं और काफी जद्दोजहद के बाद दे डू मैनेज टू कम बैक टू 2004, जहां वो मैजिक पेंसिल की मदद से अपने पेरेंट्स को बचा लेते हैं। टुवर्ड्स द एंड मैडी एंड नट्स अरेस्ट हो जाते हैं। पुराना संजू 2004 में अपने पेरेंट्स के साथ रह जाता है और नया संजू 2022 में वापस चला जाता है with a new love angle with the police officer Sheena, which no one saw coming. Anyway, so ये prediction को मैं दूंगा 0 out of 10 because we are nowhere closer to time travel. Certainly हम quantum level पे space time को समझने में काफी smart हो गए हैं, but the more we look at the universe, the more we realize कि हमें कोई clue नहीं है कि क्या चल रहा है। सारांश, time travel is still a theoretical thought process. I guess maybe in like 2000 years someone would make a video on future YouTube, you know, like saying that now it's a 10 out of 10. This show's prediction were good, not for 2022, but for, 2022. We have ideas like wormholes or particle accelerators, but nothing like a device for human travel. So yeah, if I could give negative scores, this would be that idea. Alright, so that was a quick summary of how Shaka Laka Boom Boom thought about the year that now we are going to live in. I think they did really a good job. बट कुछ लोग बोल सकते हैं ये क्या हुआ प्रेडिक्शन, या क्रिप्टो करेंसीज नहीं आए, वर्चुअल रियलिटी नहीं आया, व्हाट अबाउट द फ्रीकिंग पैंडेमिक, दे मिस्ड दैट। बट आई डोंट थिंक इट इज अबाउट व्हाट दे प्रेडिक्टेड, आई थिंक इट्स द आइडिया इन इटसेल्फ. I grew up on this show and I realized I loved it because this show wasn't teaching me good and bad. It wasn't showing me what are the good morals to follow. ये मेरा thinking को challenge कर रहा था. It made me ask questions like what if an alien came to India instead of the United States? What if हम स्कूल में magic सीख पाते, चीज़ों को उड़ा पाते? You know, things that fantasy allows you. Even during that time, there were so many interesting shows like Sonpari. These stories made you think big, think differently, think creatively. Even cartoons उस time में weren't just for humor. They also triggered ideas in your mind. They made us fear. They made us feel unexpected concepts.
Courage the Cowardly Dog addressed concepts like pedophilia through this creepy barber who was Really? tormenting Courage and making him feel unsafe. It gave us words to concepts that we never experienced. It gave us a language to think about the concepts that we always felt but could not Powerpuff express. Girls. I personally feel कि आज मैं life को जैसे देखता हूँ. A big part is shaped by the fantasy shows that I watched as a kid. I did not have access to Harry Potter के books or English content coming from a middle class family. So growing up, these were the shows जिन्हें मैं हिंदी में देखता था. And I was constantly fascinated by them. Now when I look at the content जो मेरे भांजे भांजी देखते हैं, it is so extremely dumb. It does not challenge you in any way. It does not make your imagination run wild. What about magic? What about excitement about the world? I think I found Shaka Laka Boom Boom 2022 so fascinating because this is how I think. I constantly keep wondering where India is going. How would our time be like in the future? Would we still live here on this planet, or will there be a new India even on Mars? In many Western cultures, cities have a concept of a time capsule where people leave letters for the future. We have documentaries in which kids talk about how 2000 would be like. Here we go, yeah. And I feel this kind of self-reintrospection helps us plan our future. It helps us have a common vision for the future, not just walk around aimlessly without any plans, without any goals. I think it's really nice that someone somewhere thought this way back in 2004, that this is a nice idea that's worth sharing with kids, that kids should probably be exposed to. I'm glad this show exists. I'm glad this idea stays with me because it makes me approach Beautiful. 2022 with so much more excitement. I think that was enough rant. I'll take a leave now. But Wasn't I'll be back in 2022 still 2040 COVID to review the Harman Baweja starrer Love Story Was kinda fucked up. 2040 and see how the film got 2040 right. So chalo, until then, ittu bittu jim batuta. अब उसे सही करने का वक्त आ गया है नटवर। Don't call me that outdated. Nuts. Nuts. Now I am nuts. I am nuts. Okay. Okay. Interesting. Again, I was like seeing like the older movies or TV shows that do some kind of time travel thing, and it's in like what we are currently living in, right? And see what kind of prediction they had. It's always kind of cool to see that, I would say. I mean, we are living in interesting time, obviously. Often tend to say it right, but over the last 150 years, like technology science has advanced so much, and especially over the last 30, 40 years, right? With the advent of the internet and much more crazy stuff like that, we are advancing at like speed of progress like nothing ever before, right? And it's really interesting time, It's scary time too, right? There's a lot of problem, that some might say are threatening to destroy like civilization itself and the foundation of society. But it is interesting time, yeah. Also, I was gonna say he talked at the end, like things were better when I was young. I'm starting to get a bit tired of that message. I see it everywhere, right? I feel like every day I watch at least one video about something where someone has that message, where they're like, no, it's not just that that the nostalgia, it's actually everything was better when I was young. And I feel like that about some stuff too, but I'm just kind of tired of everybody doing it. I was watching some random video that YouTube recommended me like yesterday. It was from a biker saying that like biker culture is dying and things were so much better before. And then days before I was watching one about games, right? Because of course there's so many videos like that about video games. And then some other dude about like anime, right? And I literally try to avoid this kind of videos now. And yet I still feel like every single day I'm exposed to someone saying something like this. And I don't know, like in some way it's kind of true. But frankly, like it just makes me feel down at some point when like I feel like everybody in every niche and everything is saying that. It's just kind of tiring, like it's like they have nothing they enjoy in current time, Yeah, I'm kind of tired of the things were genuinely better before and everything is trash now. I mean, I do it a lot myself, I say that a lot myself, not as directly, but sure. But I don't know. It's tiring, I'm tired. I'm tired of people saying things were better before. I feel as a leg Transformer fan, fair enough.
Oh, hello, Sa. It's your last one, you gotta go? You mean it's like your last one from the series of the Century video? I'll watch it. Thank you. But yeah, here's the link for this one. I don't know, like, I can agree in some way, but again, there's still a lot of stuff I enjoy, and I really find it like I'm tired of it, the constant everything messaging of like things were better before, you know? Yeah, even if it's true, I'm just tired of hearing it. Like, we can't go back to the past, guys. Shut the fuck up for a second. That's the feeling. That's the feeling.